We are live now. Welcome, viewers. This is Boddhisatya Tarafdar. Welcome to the page of History That Matters and Netaji Subhas INA Information Center, Kolkata. Today we have a very special guest with us. You can see Bakshi sir sitting there, joining us from Delhi, and all of us are very much aware about Bakshi sir. And I don't think that any special introduction is required for him. And Major General G.D. Bakshi sir is a prolific writer. He served the nation being in the army, and then he's a leading military analyst, and he's a prolific writer. And when he speaks about Netaji, he speaks from his heart. And I believe that though he speaks from his heart, but he speaks on facts. Sir, welcome to our Facebook page. And this particular center, Netaji Subhash INA Information Center, is basically an initiative of Boshirat Local Association of Bharat Scout and Guide, West Bengal. I welcome you to this program and thank you for joining this program, sir. Firstly, thank you so much for having me over, and it is a privilege to talk on Netaji, especially because it is the 125th anniversary of Netaji is being celebrated this year. As you all are aware, this anniversary was kick-started by the Prime Minister himself in Kolkata on 23rd of January, Netaji's birthday. We had an international seminar at the National Library in Kolkata, and thereafter we had a program Light and Sound show at the Victoria Memorial, where he had come, and the Chief Minister of West Bengal, Mamta Didi, had also graced that occasion. Now, yes. This is an appropriate year to take stock, to take a look back at our history, to try and analyze in a very objective manner what was the contribution of Netaji towards our freedom, and what was the contribution of the Azad Hind Fauj. It's very important because we must have a clear idea of our history. History is not myth-making. History is facts, empirical, hard facts, right? And we have to, when we write history, go by a very factual analysis of what happened. We have to go to primary sources. And today I want to raise a very important issue. What is the issue that I'm talking of? You see, the critical issue is that the history of India, the history of the freedom struggle that we have today, that the IAS aspirants study before they go for their IAS exam, is being written by a set of Western-oriented leftist historians. The primary one of them being, for ancient history, it is Ramila Thapar, and for modern Indian history, and especially the freedom struggle, it is Bipin Chandra Pal. Bipin Chandra Pal wrote almost a 650-page magnum opus called The Freedom Struggle of India. How many pages are dedicated to Netaji and the INA? 1.5. 1.5 pages out of 650 are devoted to Netaji. That is a great travesty of the truth. That is what we are crying against. And my simple point is, you see, I am a PhD. I have cleared my PhD from the University of Madras. Before that, I did my MPhil in research methodology and strategic studies, again from the University of Madras. So I'm quite well versed with research methodology. I'm qualified to speak on that subject, right? And my simple point is, all the histories of the freedom struggle that were written in 1950,
in 1960 and even in the early 1970s were written without access to the transfer of power archives in London. These are the top secret transfer of power archives, top secret correspondence of the British, which led to the freedom of India. They were declassified only in the year 1977. You understand that? Only in 1977 did the British declassify their top secret files pertaining to the freedom of India and the transfer of power. They do not call it the freedom of India. They call it the transfer of power archive. Because factually, in 15th August 1947, India did not become free. It merely became a dominion of the British Empire, like Australia or Canada. All right? That is not freedom. And the greatest tragedy of India is that though, and we will show that by empirical analysis, though freedom came because of Netaji Subhas Chandra Bose and the Indian National Army, the British very cleverly handed over power not to Netaji, he died in Russia, not to the Azad Hind Fauj, which was, out of 60,000, 26,000 were killed. 26,000 out of 60,000 means 44% of the force, nearly half the force was killed. I want to explain the scale of that sacrifice. Out of 13.5 lakh Indian armed forces, that is the Army, the Navy and the Air Force, you know what have been the total casualties since 1947 when we became notionally independent? 25,480 names are inscribed on our National War Memorial. Please understand. That means out of 13.5 lakhs, we have about 25,480 names. Out of 60,000, 26,000, that means a little more than these, were lost or laid down their lives in just 2 years. Just 2 years of intense fighting in the Second World War, and they fought to make India free. Yet, the sad truth is, there is not one war memorial, not one stone on which the name of these 26,000 warriors are inscribed. Today, we have even lost those names. Nobody has all of those names. It is only when you read the British documents, the British military intelligence assessment, that we come to a figure of how much casualties they estimated they had inflicted on the Indian National Army by the bombing from the air, by the use of artillery and tanks and everything against foot soldiers. All right? This is the figure which is given in the official history of the INA. Okay, that was by Captain Yadav. That was compiled immediately in the wake of the Second World War and the final defeat of the INA. The INA may have lost the battles of Imphal and Kohima, but they fought. They fought brilliantly. They fought with great tenacity and very great bravery. They not only fought in Imphal and Kohima, they also, fought in the retreat through Burma. They fought on the Irrawaddy River. They fought at Mount Popa. And they put up a brilliant and tough fight. And the best compliment came from the enemy, from the British, General Gracie, who subsequently became the first British chief of the Pakistan Army. He told Colonel Prem Sehgal, we had tanks, we had aircraft, we had artillery,
You had nothing. Yet you people went on fighting. It was madness. Why did you fight like that? Why didn't you surrender? Don't you think it was madness? And Colonel Prem Sehgal of the INA replied very calmly, General, a revolutionary army fights on the spirit of madness. This is the best tribute to the Azad Hind Fauj, the Indian National Army, and it comes from the enemy himself, from the British. So as I was saying, they may have lost the battles of Imphal and Kohima, but they won the war for Indian independence. And how was that? How did that happen? That happened because after the war, the British wanted to insult the Indians, to rub their noses in the sand, to humiliate them. Don't forget, thereafter World War I, when we expected them to give us home rule, to give us dominion status, you know what they had done? They had given us Jallianwala Bagh, the massacre of Jallianwala Bagh. Okay? That was to tell you, you think you did us a favor by fighting for us? You were bloody well, we would kick you and make you fight for us. And if you think you can get independence, we will show you life. And they killed over 1,000 Indian men, women and children unarmed in the Jallianwala Bagh massacre. That was in the heart of Punjab, from where the bulk of the troops had gone to fight the war of the British in Europe, in France, in South Africa, in Turkey, in Syria, Palestine, Iraq. Indians had fought and died. Over 80,000 Indians had died. We expected them to be grateful. But instead of gratitude, what we got after the First World War was a bloody massacre of Jallianwala Bagh. And that is how people realized that these people would never make us free. And therefore, the Gandhian struggle was started. And it is to the credit of Gandhiji that he made it a mass-based struggle. He took it to the villages rather than just a middle-class phenomena of the countryside led by the lawyers, the Vakil Raj. Right? Now, the simple fact of the matter is that this peaceful struggle simply failed to move the British. Subhas Chandra Bose was one of the first to realize this. In 1939, when the Second World War started, he told the British, Gandhiji, the British will not go because of non-violence. They will only go if there is violence and if there is military pressure put on them. Otherwise, they have no reason to go. They can tolerate non-violence. It is in their tolerance threshold. That is why they have tolerated it so long, because they want India to remain non-violent. They have fearful memories of the 1857 freedom struggle. So they don't want a violent revolt. They want to keep India non-violent, and by Gandhiji, by helping keep India non-violent, unknowingly, unwittingly was being used by the British for their own end. He was still trying to see how much he could do. But it was Bose who realized that nothing would happen on this path. And Bose was absolutely right. Now Gandhiji drove him out of the Congress party. Gandhiji could not stand somebody giving a contra opinion. And he, even though he became the president of the Congress, and then he stood a second time against the wishes of Gandhiji, and yet he won. Gandhiji's candidate Sitaramaiah lost. This was the popularity of Bose in India. On par with Gandhiji, if not, it became higher subsequently. Right? And Bose, after that, realized that the non-violence was no way to go. So that is when he escaped from India. He entered Kabul, Afghanistan. Then from there he contacted the Italian embassy, right? He took on the role of Count Orlando, a British Italian count. Point. Sorry.
Sir, a small point I would like to mention. Huh, Was right. Netaji politically marginalized at that point of time? Well, yes, certainly in a way, because Gandhiji forced him to resign, even though he won the election. Gandhiji saw to it that he could not function. He made all the other members of the Congress Working Committee resign. So from outside, he ensured that that Nehru and the others, with their help, he totally marginalized Netaji, and this is what forced him to leave India and follow the violent path. In a way, it was Right. good for India, and it was good for Indian freedom. Otherwise, with the Yes. Gandhi dispensation, it would never have happened. So, as I was saying, he went to Kabul, he went to Moscow, from there he went to Rome and to Berlin. He met Hitler himself, and he started the India Independence League. Then he raised the Industrial Legion, the Indian Independence, the Indian Foreign Legion from the prisoners of war which were held, Indian prisoners of war which were held by Germany. And, he was bold enough to tell straight to Hitler that you are wrong about your assessment of India and Indians. Hitler in his Mein Kampf had put some very disparaging remarks, and he told him to his face that you are wrong. But then he also said that, it is wrong of you to attack the Soviet Union. You should ally against these so-called allies. But Hitler went and invaded the Soviet Union, and that was the end of Hitler. He started losing the war. And then Netaji realized that if he stuck on in Germany, nothing would happen. The Japanese ambassador in Berlin played a very stellar role. He realized the value of Netaji. And there in the east, Rash Bihari Bose and Yes. Gyani, had helped to raise the Indian Independence League they had founded. And with the help of the Indian Independence League and Major Fujiwara, the T.E. Lawrence of the Japanese army, they raised the Azad Hind Fauj under General Mohan Singh, then Captain Mohan Singh. That was the first Azad Hind Fauj. It was a strength of about 30,000, and unfortunately that did not work out. There were lots of problems with the Japanese, and there were problems in terms of how this force was run, right? And that is the time the Japanese requested the Germans to give them both. The initial plans was to fly him across Russia, uh, you know, Right. fly him across Russia in an aircraft. And the British had gotten wind of it. They had made plans to get the aircraft shot down, to shoot this aircraft down with the help of the Americans and the others. So Hitler decided to send him by submarine. And Netaji took a over 3 months long voyage in a U-boat submarine right from Europe almost to the coast of South America, where this submarine carried out attacks, torpedo attacks on the British shipping, and from there around the coast of South Africa, and then around to the island of Madagascar. There the Yes. Japanese had sent an I-29 submarine. When both the submarines surfaced at night, there was a huge storm on the sea. Sea Right, stayed sir. 5, In which your book meant also that you have waves, written the same. yes, 30 to 40 feet high waves, and when the submarines came, the waves were so huge that they could not close up more than a kilometer. Because if they had, they would have clashed like this and both the submarines would have been sunk. So the German Captain Werner Miela, he called Bose to the top of the coining tower of the submarine and he said, have a look. He says, that is the Japanese submarine 1 kilometer away. So he says, can't you get me closer? He says, Herr Bose, if I go closer, the two submarines could collide. Can you see this storm? 30 to 40 feet high waves. So he says, how then do I get to that submarine? The Japanese submarine. I've come so far to get into them.
He says, you have that 3-man rubber boat. One oar you will have to hold, the other your secretary, I will give you one sailor. Right? Mhm. So, Bose looked at the sea, and then he looked at that small little boat, and he says, what are my chances of getting across? So the German submarine captain said, close to zero. He said, then what do you advise? What do you advise? He says, Herr Bose, I advise you to go back to Germany. And you know what Bose said? Captain, I did not come all this way just to go back. I did not come all this way just to go back. You know, he was a very brave man. That is why I call him a samurai, a poet warrior, an intellectual scholar warrior. And then he got into that 3-man boat and they rowed across for 1 kilometer through a massive sea storm, 30, 40 feet high waves. Many times that boat simply disappeared. And, you know, that captain banged his forehead. He was so sorry that he had brought this man so far only to lose him towards the end. But Bose made it to the Japanese submarine. And the rest is history. Right? He made it to the Japanese submarine and he got to Japan. He expanded the Indian National Army to a size of 60,000 by taking more prisoners of war, by taking recruiting more Indians who were settled in Singapore and Malaya, and he founded an independent government of India in Malaya, in Singapore. He founded an independent, government in exile. This on 21st of October 1943. This was recognized by 11 countries of the world. Germany, Japan, Italy, etc. were there. But it was also recognized by Soviet Russia, which was then an allied power. Do you understand? It was a legitimate government, therefore. It had its own constitution, own laws, own banks, everything. And it had an army. And it declared war against Great Britain and America. All right? It declared war against Great Britain and America. And that is how, the real struggle for Indian independence began. Sir, another point I would like to mention. Yeah, please tell me. In your book, The Indian Samurai, you have mentioned about the timing of Netaji's arrival in Far East. So, if you can put some light on that. Right. You see, he reached there in he had reached there in 43 end, and then he was trying to tell the British tell the Japanese to hurry up and attack the British. You remember that in 43, the Japanese had captured, the whole of Malaysia, they had captured Singapore, and then they had attacked Burma. And they had gone like a knife through butter. And they finished their Burmese campaign 2 to 3 months ahead of schedule. That is the time Bose told them, go for the attack on India. But the Japanese hesitated. They felt it would be overreach and they would get sucked into the large landmass of India like they had been sucked into China. So they hesitated. And in that we lost a golden opportunity. From the military point of view, had the Japanese and the INA attacked British India, then they would have gone like a knife through butter. The British forces were utterly demoralized, disorganized. Right? The Japanese had air superiority. This is one of the sad facts of history, that a golden opportunity was missed. The British were so panicked, so scared. They thought that they would, Japanese and the Azad Hind Fauj would come via Bangladesh, what is now Bangladesh. Cox's Bazar and the other, the ports of Bangladesh come up the estuaries in a naval invasion. Right, in a naval invasion.
right? And they were so scared that they burnt all the river crafts and river boats, which they felt the Japanese would exploit, would use to invade up into Bangladesh and then into Calcutta proper. They burnt all the river boats. And because of that, the great famine of Bengal happened in 1943, in which over 3.5 million Indians died. Right? We are told, and while these Indians were dying, the British continued to export grains and rice from India to Europe to their soldiers, to feed their army. We are told, oh, Netaji took the help of Hitler. Hitler was such a tyrant, such a demon. Were the British any better? Because of the British, there were 12 such famines in India in which millions of Indians died. And they callously let them die. Is that not worse than the massacre of the Jews? And yet we lick their boots. Yet you want to lick their boots. You want to call them morally superior? Because we were a nation, we had become a nation of boot lickers. Boot lickers of the British. You understand what I'm saying? We had become a nation of boot lickers. And great moral arguments are given to us as to why it was so wrong to go to Hitler. Why not? My enemy's enemy is my friend. That is what Chanakya Niti says. Bose had done just that. The attack finally came in 1944. It was a year too late. They almost won the Battle of Imphal and Kohima. It is one of the hardest fought battles of the Second World War and the hardest fought battle of the British Empire. Nowhere have they been under such pressure. 2 INA divisions and 3 Japanese divisions. They were fighting this Battle of Imphal and Kohima. And they almost turned it. Even in this battle, had one of the groups bypassed Imphal and Kohima and gone for the railhead of Dimapur, this battle could have been clinched. 19-20 का फर्क था. Okay? And then because of air power, because of the monsoons, because of the failure of the Japanese supply line, they lost this battle and they had to retreat. They lost the battle and they had to retreat. They may have lost the battle of Imphal and Kohima. They put up a tenacious fight in Mount Popa. You know, the British, one whole division and a brigade of tanks repeatedly attacked Mount Popa, which was held by the INA. And they could not take it. They could not take it. The British were shaken by the way in which the INA fought. They thought that the Indian soldiers can only fight under British officers, and under their own officers they will prove to be a disaster. They were proved absolutely wrong. Under General Shah Nawaz, Colonel Prem Sehgal, Colonel Dhillon, the Indian soldiers put up such a fight that the British were left shaken. But the British had air superiority, the Americans were on their side, material power was on their side, and they won that particular war when the Americans threw atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. It was only then and then that Japan surrendered. All right? Only then and then. And thereafter, they won the war. Now they said is the time to humiliate the Azad Hind Fauj, humiliate the Indians. So they held a very public trial at the Red Fort. The choice of the Red Fort was deliberate choice, because Bahadur Shah Zafar, the last emperor of the so-called Mughal Empire in India, had been tried there for treason and exiled to Burma. Because Red Fort was the final objective. हम दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे. These were the slogans of the INA. So they wanted to humiliate the INA. They wanted to humiliate all Indians. You fought for freedom. You thought you could take it by military force. Now see what happens to you. The same INA people जो लाल किले जाना चाहते थे,
जो रेड फोर्ट पे तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे, तुमको हम लाल किले के तहखानों में टॉर्चर करेंगे, तुम्हारा जनरल कोर्ट मार्शल लाल किले में होगा, और अगर उनका बस चलता तो आईएनए के अफसरों को फांसी लाल किले में लगाई जाती। लेकिन क्या हुआ, ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी वॉर खत्म होने के बाद, नवंबर दिसंबर 1945, राइट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, बम फट गया, धमाका हो गया, बिल्कुल रिवोल्ट शुरू हो गया पूरे भारतवर्ष में। लोग गलियों सड़कों पर निकल आए, कलकत्ता में, दिल्ली में, लाहौर में, मुंबई में, सब शहरों में, कराची में, और जय हिंद के नारों के साथ पुलिस के साथ झड़पें हुई, पुलिस ने फायर खोला, और पहली बार फायर खोलने के बावजूद भी भीड़ तितर बितर नहीं हुई, चढ़ती गई चढ़ती गई। भीड़ चढ़ती गई, राइट। और इसके चलते अंग्रेज, उनके हौसले पस्त हो गए, हैरान रह गए। नाउ दिस इज द क्रिटिकल पीरियड। इतिहास में ये जो पीरियड है, नवंबर दिसंबर 1945 टिल फरवरी 1946, बहुत क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है। और इसकी हमने स्टडी की है, बिकॉज द डिसीजन टू टेक ट्रांसफर ऑफ पावर वाज टेकन इन दिस पीरियड, एंड यू नो व्हाई एंड यू नो हाउ, बिकॉज फर्स्टली ये स्टार्टेड, उस वक्त 40,000 अंग्रेज सिपाही थे हिंदुस्तान में, वो थक चुके थे, बाकी सारी अंग्रेज फौजें वापस घर जा गई थी, बिकॉज दे वर होम सिक, वो घर जाना चाहते थे 6 साल की वर्ल्ड वॉर के बाद। दे वर इन नो मूड, दे वर इन नो स्टेट टू फाइट द इंडियन आर्मी। वो बोले हम थक चुके हैं साहब, 6 साल हम लड़ते आ रहे हैं, दे जस्ट वांटेड टू गो होम। और उस वक्त 40,000 गोरे सैनिक थे, और आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ क्या थी, 25 लाख, 2.5 बिलियन। यू अंडरस्टैंड दैट फिगर? 25 लाख हिंदुस्तानी सिपाही जो जर्मनी, जापान, इटली पर फतेह पा चुके थे, गोरों को मारा था उन्होंने, ठीक है। और अब उनके पास अफसर भी थे, लीडरशिप भी थी। करियप्पा तब तक ब्रिगेडियर बन चुके थे, ब्रिगेडियर करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल करियप्पा बने, और थिमैया और उनके साथ के अफसर कर्नल रैंक तक पहुंच चुके थे। और इसका मतलब 25,000 हिंदुस्तानी अफसर थे इस फौज में, और ये काफी थे रिवोल्ट लीड करने के लिए। 1857 के रिवोल्ट में हमारी भारतीय सेना ने जो विद्रोह किया था, उसमें कोई अफसर नहीं थे, सारे बेचारे जवान और एनसीओ तक ही थे, और उन्होंने भी बड़ी हिम्मत से लड़ा, बट उनको तजुर्बा नहीं था बड़े पैमाने की लड़ाई, इसलिए वो हार गए। लेकिन इस बार 25 लाख भारतीय सिपाही और 40,000 गोरे, और अगर ये 25 लाख पत्थर भी मारते तो अंग्रेज एक दिन टिक नहीं सकते थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को पढ़ें, हमारे डॉक्टर कल्याण डे थे, जो नेताजी सुभाष आईएनए ट्रस्ट है, हमने इन्हें वहां पे लंदन में भेजा था कि साहब आप जाकर वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स भी क्लासिफाई हो चुकी हैं, उनको पढ़ो। नाउ द प्रॉब्लम इज बिपिन चंद्र पाल ने उनको नहीं पढ़ा, क्योंकि तब तक वो डिक्लासिफाई नहीं हुई थी। his history was incomplete and not drawn from factual sources, but from what the Congress said, what the Congress leaders said, what the local newspaper said. That's all. The actual authoritative documents were not available to Bipin Chandra when he wrote The Freedom of India. This is a fact that scholars must ponder over. How can you treat that as factual history? That was just myth making and narrative.
if you did not consult the transfer of power archives, if you did not consult what the British felt and wrote and thought about it, what was their analysis, what was their decision making, how could you come to empirical conclusions? Absolutely. Yet that is an authoritative text because it suited the British, it suited the Congress, it suited a particular dynasty. It is a hagiography. It is the myth making to make Nehru sound the greatest emperor of India for all times to come, who just with the Gandhi and Nehru, with their non-violence and peace and ahimsa and satyagraha, they got us freedom. Please read the document. They give you an entirely different story. And it is about time that India comes to terms with this factual account of the British. How can you write history without recourse to authentic documents and sources? And what the British thought is critical because it is they who gave you independence. Almost like a bloody gift. You were begging for it. How can beggars be choosers? Right? The fact is, we sent Dr. Kalyan Dey. We identified a set of British key decision makers and we asked him to kindly look at the letters and documents signed by these key decision makers. Now, ये कौन थे? ये फैसलाकार, फैसला लेने वाले कौन थे? Number one was Lord Clement Attlee, the British Prime Minister of England from 1945 to 1950. 5 critical years. He is the most critical decision maker of the British Empire as far as transfer of power is concerned. The British don't call it independence of India. They call it transfer of power. Transfer of power to a set of collaborators, quislings, traitors. You understand what I'm saying? The next decision maker was Viceroy, Field Marshal Viscount Wavell, who was the Viceroy of India in New Delhi. Third important decision maker was Field Marshal Claude Auchinleck, the Commander-in-Chief of the British Army in India, who was the number 2 to Field Marshal Viceroy Wavell. All right. Then in England, there was Lord Pethick Lawrence. He was the Secretary of State for India. Then there were the governors of the various Indian provinces, like Casey was the governor of West Bengal. And of course, there were the governor of Punjab, the governor of... Hello, can you hear me? The governor of... hello. Can you hear me? I cannot see you, sir. Just a second. 1 second. Yeah. I cannot see you. There is some network problem, I believe. Wait. Okay, sir. Now? Now I can see you. There is an additional window which got created. Let me remove the same. Remove that. Now it is there. It is alright, sir. It is alright, sir. All right. So as I was saying, you see, we identified the key decision makers. And then we decided to study their papers. Now we were horrified, that the most, that in December 1945, Commander-in-Chief of India, Field Marshal Claude Auchinleck, he had written a letter to the Viceroy advising that we have हमारे पास केवल 18 महीने हैं. We have only 18 months in which to give freedom to India and get the hell out of here. Otherwise, we will be finished. We will be slaughtered. I have just got 40,000 Gora soldiers and there are 25 lakh Indians who are being demobilized. We are reducing the size of the British Indian Army
from 25 lakhs to 3.5 lakhs. And even these 3.5 lakhs, we will split between India and Pakistan. Most of these soldiers are being sent home. They are very unhappy, they are very angry, and they are totally influenced by Netaji and the Azad Hind Fauj. They are totally, swayed by him. Their loyalty to the British Raj has been destroyed by Netaji and the Azad Hind Fauj. We cannot trust on them or rely on them to protect the British Raj, to fire on their own people. They will not do so. They will not do so. And there is likely to be a revolt in the British Indian Army. And if that happens, we are done for. I have just 40,000 soldiers. How can I fight with them? How can I fight with them? You see, I will need reinforcement. Then in his letter, he spells out, I will need 6 small divisions. That is 1,20,000 more British troops. Where will they come from? They are being demobilized. They have been fighting for 6 years. People are fed up. That is the time he sent it to Lord Field Marshal Wavell, the Viceroy of India. He had also served in the British Indian Army all his life. He was called a Sepoy General. You understand? Because he had served all his life with Indian troops. He also knew what the Indian troops are like and when they can be angry, what they can do. So he sent the same assessment to London. 18 महीने हैं आपके पास, अपनी लुटिया बांधो और भाग लो, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो you will cut a very sorry figure. Please announce that you are giving them independence. That will quieten things. The people are enraged. The INA trials have totally backfired. They were supposed to scare the hell out of the people of India. The people of India have risen in white hot revolt. गोली चला रही है पुलिस, वो रुक नहीं रहे. ये साहब अल्फाज हैं, मेरे नहीं. ब्रिटिश फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिल ने और ब्रिटिश फील्ड मार्शल वेवल के. वेवल ने जब ये चिट्ठी भेजी टू लंदन, लंदन उस वक्त हिल गया, लेकिन लंदन बहुत दूर था, गदर तो इंडिया में हो रहा था. तो दे सेड, अरे यू आर लूजिंग योर नर्व. अरे हम मर्सिनरीज हायर करेंगे, अंग्रेज मर्सिनरी फ्रांस से, वहां भी तो फ्रेंच लीजन है, ये है वो है. Oh, he will get you Gora troops to kill the Indians, kill the bloody Indians. They said, Gora troops आप recruit करोगे, कितना टाइम लोगे, कब तक वो आएंगे, ये बम फटने वाला है. और उन्होंने कहा था कि फरवरी तक पहला रिवोल्ट हो सकता है, और अगर तब तक नहीं गए तो मई जून में बड़ा भारी विद्रोह हो सकता है. ये लिखित में है. और इतने डरे हुए थे वो इस विद्रोह से, आर्म्ड रिवोल्ट से, ये चाटुकारी नहीं, आर्म्ड रिवोल्ट, कि उन्होंने एक प्लान बनाया था ऑपरेशन गंडोला. उसके भी कागज हमने पढ़े हैं. ओके, ऑपरेशन गंडोला. और क्या था ऑपरेशन गंडोला? कि सारी अंग्रेज औरतें, बच्चे, फैमिलीज लेके उन शहरों में जाओ जहां कोई बंदरगाह है, कोई पोर्ट है, या एयरफील्ड, एरोड्रोम्स हैं, ताकि जो अंग्रेज सिपाही हैं वो आखिरी चक्रव्यूह बना के लड़ेंगे बाहर, ताकि ये फैमिली भाग सकें और लास्ट में वो लोग भी आखिरी जहाज पकड़ के भाग जाएंगे. ये प्लान्स बन चुके थे. These contingency plans were ready. किसके डर से? सत्याग्रह के डर से. फौजें भागती हैं. बकवास मत करो, बेवकूफ मत बनाओ. वो भागने की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की 25 लाख की फौज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉम्बैट हार्डन्ड, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, तजुर्बेकार अपने अफसर हिंदुस्तानी, अपनी हिंदुस्तानी फौज अगर वो विद्रोह कर पड़ी साहब, तो आप टिक नहीं पाओगे, 1 महीना नहीं टिक पाओगे. और विद्रोह के आसार साफ दिख रहे थे. रिपोर्ट में लिखा है कि साहब
हिंदुस्तान की फौज के सिपाही वर्दी में आजाद हिंद फौज को फैसिलिटेट करने के लिए जो जलसे हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, वर्दी में अटेंड कर रहे हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, जो आजाद हिंद फौज के सिपाही जिनको छोड़ दिया गया है, उनको लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं एज हीरोज, एज हीरोज। और हमारे सिपाही वर्दी में जाके ये रैलीज अटेंड कर रहे हैं, वर्दी में जाके अटेंड कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर गॉड्स सेक अंडरस्टैंड, राइट, कि हो क्या रहा था उस वक्त। इतिहास जानना बहुत जरूरी है। सही इतिहास नहीं जानोगे, कहानियां मढ़ोगे, थोपोगे, बेवकूफ बनाओगे लोगों का, किसी ना किसी दिन सत्य निकल आएगा सांप जैसे, तुमको डसने, अजगर जैसे तुमको खाने, क्योंकि तुमने बेवकूफ बनाया है भारत की जनता को। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. और साहब, जब उन्होंने ये चिट्ठियां भेजी तो बड़े चिढ़ के वहां से चिट्ठी आई, यू सीम टू हैव लॉस्ट योर नर्व। उन्होंने बोला कि ये जो दो जर्नैल हैं हमारे, फील्ड मार्शल वेवल और ये जो है वाइकाउंट जो कि फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिले, द्वितीय महायुद्ध लड़े हुए इतने बड़े योद्धा, जिनको चार्ज दिया है भारतवर्ष का, योद्धाओं को दिया था, पॉलिटिशियंस को नहीं दिया था। बोले ये जो है, दे हैव लॉस्ट देयर नर्व, इनकी पतलून ढीली हो गई है साहब। तो वेवल ने साहब जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। वेवल ने कहा, इफ हिज मैजेस्टी थिंक्स दैट आई हैव लॉस्ट माय नर्व, it is his majesty's duty to relieve me this instant of my command, but you ignore my advice at your own extreme peril. अगर आप समझते हैं कि मैं घबरा गया हूं, तो आपका फर्ज है कि आप इसी वक्त मुझे इस पद से, इस कमांड से हटा दें। लेकिन मेरी परामर्श को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, वो खतरा आपके सर होगा। रिमूव मी फ्रॉम कमांड, अगर ऐसी बात है तो। ये चिट्ठियां पढ़ लीजिए ना साहब, आप इतिहास जान जाएंगे, आप सच जान जाएंगे। गधे नहीं है भारत के लोग, पढ़ने दीजिए उनको ये इतिहास साहब, पढ़ने दीजिए। लेकिन पढ़ना नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं देना चाहते, एक कहानी बना के रखना चाहते हैं अंग्रेजों के चाटुकार कुत्ते। बिल्कुल अंग्रेजों की चप्पल चाटने वाले जो रह गए हैं, अभी भी उनके लोग यहां पे बचे हुए। तो मैं कह रहा हूं साहब कि उस वक्त उन्होंने ये एडवाइस दी, लंदन ने बोला ये हो नहीं सकता, ये आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप डर गए, आपके पसीने छूट गए। और 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ आप जानते हैं? पूछो हमारे स्कूल के बच्चों, खोल के देखो हमारी इतिहास की किताबें, जो पढ़ाई जा रही है झूठ, फरेब पढ़ाया जा रहा है, बकवास, मनगढ़ंत कहानियां। क्या बोला उसमें? 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया, विद्रोह हुआ, ठीक है साहब। और ये विद्रोह के चलते 80 जहाजों में से 79 शिप्स पर हमारे भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतारा, तिरंगा चढ़ा दिया, अपने अंग्रेजी अफसरों को उठा के पानी में फेंक दिया। और फिर मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते, नेताजी की तस्वीरें लेके उन्होंने, सिपाहियों ने जुलूस निकाले कि हम आजाद हैं। उन्होंने अपनी जहाजों की तोपें अंग्रेजों के रहने के स्थानों पे लगा दी, फायर भी खोला, ये भी हुआ।
उस वक्त अंग्रेजों ने किसका इस्तेमाल किया इस विद्रोह को दबाने के लिए? नेहरू का, है नेहरू का, सरदार पटेल का, बाकियों का, कि भाई आप इनको मनाओ, हम दे देंगे आजादी। उस वक्त बत्ती बंद हो गई अंग्रेजी सरकार की, ठंडे पसीने छूट गए। 18 फरवरी को जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो वो समझ गए कि जो हमारे जर्नैल कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, 16 आने तक विद्रोह तो शुरू हो गया है, बम फट चुका है। उसी दिन 18 फरवरी को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हवाई जहाज लेकर दिल्ली आया, लंदन। हवाई जहाज लेके दिल्ली आया लंदन से, और ट्रांसफर ऑफ पावर की बातचीत भारत के चाटुकार नेताओं के साथ शुरू कर दी। वही नेता जो इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अगर वो वाकई अंग्रेजों को बाहर चाहते, वाकई बाहर चाहते, तो वो इस विद्रोह में आग डालते, वो घी डालते। वो नहीं किया, इस विद्रोह को दबाया, उनको बोला आत्मसमर्पण कर दो, हम देख लेंगे। ये था रोल नेहरू का, ये था रोल नेहरू। और आप कह रहे हैं कि आजादी उसने दिलाई। और साहब उसके बाद तो अंग्रेजों की हालत पतली हो गई। यहां पहले रिवोल्ट हुआ रॉयल इंडियन नेवी, फिर उसी महीने रिवोल्ट हुआ जबलपुर में। भारत की सेना के अंदर सिग्नल यूनिट, मेरा है बर्थ प्लेस, मेरा है शहर जबलपुर, वहां पे रिवोल्ट हुआ। सिग्नल्स की बैरक में रिवोल्ट हुआ, अभी भी गोलियों के निशान है वहां पे। सिग्नल्स की बैरक में रिवोल्ट हुआ, और जो ईएमई के ट्रूप थे उनमें रिवोल्ट हुआ। और जब सेना में रिवोल्ट फैला, ग्राउंड फोर्सेस में, तब तो अंग्रेजों की होश हवास के फाख्ते उड़ गए। बोले साहब जल्द से जल्द निकलो और भागो। उन्होंने टाइम दिया था कि साहब हमारे पास टाइम है 18 महीने का, मतलब 1948 तक का। उन्होंने भेजा लॉर्ड लुई माउंटबेटन को, भाई जल्दी से इज्जत के साथ निकाल दो, इसके पहले कुछ ज्यादा हो जाए। ये चाटुकार नेहरू बहुत चाहता है लेडी एडविना माउंटबेटन को फायदा उठाओ इसका, और जल्द से जल्द जो है इसको सत्ता सौंप के चले जाओ, क्योंकि ये इससे बड़ा चाटुकार दूसरा कोई है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, ईटन हैरो में पढ़ा है, अंग्रेज है ये तो बिल्कुल सिवाय नाम के। तो साहब ऐसा ही उन्होंने किया। आजादी आपको मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से, और सत्ता सौंप के गए अंग्रेज चाटुकारों को, कोलैबोरेटर्स को, नेहरू को, और एक नेहरू गांधी खानदान बना दिया। और उस नेहरू ने गांधी जी को भी मार्जिनलाइज करा दिया, क्योंकि गांधी जी ने अल्टीमेटली क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कराई थी, अंग्रेजों ने कभी माफ नहीं किया उनको। और आप समझते हैं कि अंग्रेज सरकार जानती नहीं थी कि गांधी जी को मारने के षड्यंत्र हो रहे हैं, उनको पता नहीं था गोडसे के बारे में, सब मालूम था, लेकिन उन्होंने गांधी जी को मर जाने दिया, क्योंकि वो नेहरू का रास्ता सत्ता साफ चाहते थे। एक मिनट हाँ सॉरी बोले। In this connection, I have got a question. What was Netaji's role when? हाँ 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 What was Netaji's role when he was in Berlin and when Gandhiji declared Quit India movement in 42? Look, Netaji was in Berlin. He had started Radio Free India, from where he used to broadcast, from where he used to monitor what was happening, and he was advising the people of India what to do to rebel against the British Empire, to cut the telegraph pole, to destroy bridges, to do non-cooperation in factories like in Europe they were doing in France, occupied France, and the other places. He was telling them how to sort of, go against the British. And it was this that shook the British. But the problem is that most of the people did not know of all this, because the British used to censor these broadcasts. They would not let the people listen. Anybody found listening to Netaji's broadcast was put in jail and tortured. So therefore, at that time, the British used 57 Gora Paltan.
British, Australian, Canadian, and they crushed the Congress uprising, crushed it. And all Congress leaders from Nehru, Gandhi downwards were put into prison for the next 3-4 years. They cooled their heels of the Second World War behind this. They were cut out from all the press. How did Gandhiji get such a massive press build-up from the British? Do you give this press build-up to your enemy? You give it to somebody whom you can rely on, whom you feel will do what is good for us. How can the leader of a freedom struggle get so much coverage in the official British media? Please, I ask you this question. Because they felt he was serving their purpose. It was in their interest to blow him up. Oh, but larger than life. And not only in India, in Africa, in every other place where they had colonies. This is the model of revolt against the British. Peaceful non-cooperation. Satyagraha, please pass, grow thin. We will take pity on you. But you try and fight, oh, then we will sort you out. So when Netaji, whenever he was put in prison, do you know the way they tortured him? You know the way they ill-treated him? He got tuberculosis in prison because he was put in such dirty conditions in Rangoon. And he was in Mandalay, if I'm not wrong. And what happened when Gandhi was put in prison? What happened when Nehru was put in prison? The Aga Khan Palace. Now you see the difference. Whom the British considered their enemy and whom they considered their friend. फर्क देखिए साहब ट्रीटमेंट में. जब ये लोग गए जेल, नेहरू गांधी, इनको आगा खान पैलेस में रखा गया. और जब नेताजी जेल गए तो उनको टॉर्चर किया. जब भगत सिंह जेल गए बुरी तरह टॉर्चर किया, ऑलमोस्ट जान से मार डाला गया टॉर्चर करते करते. ठीक है, ये फर्क होता है दुश्मन में और कोलैबोरेटर. साहब ये बहुत दुख की बात है कि एक कहानी बनाई गई टू जस्टिफाई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू द नेहरू गांधी फैमिली कि सारी आजादी केवल और केवल जो है सत्याग्रह, शांति, अहिंसा से मिली. यूनिक है ये स्ट्रगल. दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इतने हमने उपवास किए ये कि जो अंग्रेज थे रो रो के आंखें सूज गई. प्लीज हमसे आजाद हो जाओ. क्या बकवास है साहब, इसका बेवकूफ बना दे. लेकिन दिस सूटेड द ब्रिटिश बिकॉज दे वर ग्लोरिफाइड a liberal people who came here to modernize India. अरे हमने तो पैसा खर्चा साहब, ये बोल रहे हैं आज. हमने रेलवे बनाई, टेलीग्राफ बनाया, आपको मॉडर्नाइज किया. तुम तो जंगली थे. अबे तुम जंगली थे, केव्स में थे जब यहाँ पे मौर्य सभ्यता थी, मौर्य शासनकाल इतना विकसित था. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ये उन्होंने साहब एक वो जो मनगढ़ंत एक नैरेटिव बना के गए कि हमने तो बहुत उद्धार किया भारत पर, और जब इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े तो हम चले गए. चले नहीं गए, धक्का मार के निकाले गए. नहीं जाते तो खून खच्चर हो जाता, खून के नदियां नाले बह जाते. ये नहीं चाहते थे नेहरू गांधी. वो चाहते थे कि पकी पकाई खीर है, अंग्रेजों ने पाल के रखी है, हमें मिल जाए तो अंग्रेज दे विल लुक वेरी गुड, वेरी लिबरल, और हम साहब महान नेता हैं, विश्व स्तर के नेता हैं, दुनिया लड़ती झगड़ती रहती है, हम शांति प्रिय हैं. कोई एक गाल पे छांटा मारता है, हम दूसरी गाल आगे कर देते हैं. हम हिटलर के सामने दूसरी गाल आगे करते, हिटलर रो रो के मर जाता. बकवास मत करो. हिटलर ने तुमको मीट हुक पे टांग देना था, कोड़े मार मार के तुम्हारी पीठ लाल कर देनी. और ये अंग्रेजों ने किया उनके साथ जिन्होंने विद्रोह किया. सबसे बड़ा डर अंग्रेजों को था 1857 का. उनका भूत उनको सता था. और वो 1857 किसने किया था? भारत की फौज. वो हम हार गए. इसलिए हर इतिहास की किताब में वो लड़ाई भरी हुई.
लेकिन जो लड़ाई हम जीत गए, 1946 के विद्रोह का कोई वर्णन है? नहीं। नेताजी का कोई वर्णन है? नहीं। आजाद हिंद फौज का कोई वर्णन है? नहीं। क्लीमेंट एटली और पीवी चक्रवर्ती के डायलॉग का भी कोई वर्णन नहीं है सर। किसका? सर क्लीमेंट एटली, द डायलॉग बिटवीन क्लीमेंट एटली, द डिस्कशन बिटवीन क्लीमेंट एटली एंड पीवी चक्रवर्ती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए साहब, मैंने डेलिबरेटली क्लेमेंट एटली की डायलॉग को मेंशन नहीं किया, क्योंकि हर कोई इसको कोट करता है एज द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है साहब। और हुआ क्या था, जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ऑफिशिएटिंग गवर्नर थे वेस्ट बंगाल। लॉर्ड क्लेमेंट एटली 1956 में आए, आजादी के बाद। उनका गेस्ट रहा 2 दिन। लंबी चौड़ी वार्ता हुई उसके दोनों के बीच में, और उन्होंने स्पष्ट, वो थे जज, स्पष्ट उनको सवाल, क्लियर डायरेक्ट सवाल पूछे। बोले द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी in 1942 had failed. Why then did you leave just 3 years later, after you had won the Second World War? So what was Clement Attlee's answer? क्या जवाब था क्लेमेंट एटली का? 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। 3 शब्द, राइट? He said because of आजाद हिंद फौज, the loyalty of the Indian army थी, पुलिस थी, वो बिल्कुल खलास हो चुकी। लोग हमसे बहुत गुस्साए हुए थे, कभी भी विद्रोह हो सकता था। नेवी में विद्रोह शुरू हो गया, हमारी लोग बहुत थके हुए थे उस वक्त, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वो नहीं लड़ना चाहते थे, और इसलिए हमने आजादी देकर पिन छुड़ाकर चले। ठीक है। अगला सवाल उसने पूछा डायरेक्ट, तो फिर महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन थी भारत की आजादी में? और जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, एंड आई कोट, ठीक है, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL, minimal, कम से कम। ये किसका है कथन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, द मैन हु साइंड द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ऑलराइट, ये है सच्चाई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, हिस्टोरिकल रिसर्च की मेथोडोलॉजी के अनुसार दिस इज नॉट डायरेक्ट एविडेंस। क्लेमेंट एटली is saying this to P.B. Chakrabarti. This was like P.B. a private Chakrabarti said this to Sarkar, the historian. ठीक है? आरसी मजूमदार, सॉरी एक मिनट। हाँ, हाँ आप बोलिए। हिस्टोरियन आरसी मजूमदार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रमेश चंद्र मजूमदार, sorry, you are absolutely right, Majumdar, R.C. Majumdar, and R.C. Majumdar was cited, his book was cited by Ranjan Bora in a very, very important paper in the Historical Journal of India. ठीक है? So it is first, second, third, fourth hand. So most of these historians said, oh, this is not evidence. This is secondary, tertiary. Somebody told somebody, then he told him, then he told him. It is not first hand. Now, sir, we are giving you first-hand evidence. First-hand evidence is being supplied to you. We are giving you the authentic documents of the transfer of power archive. In my book, Bose or Gandhi, Who Made India Free, we have not just cited the page number and para number. We photocopied those documents. I still have the original photocopies. And we put them in the book. You please read. पढ़ लीजिए ना कुछ साहब, इतनी तकलीफ करिए ना सब जानने की।
पढ़ लेंगे तो कोई गधा भी कह देगा हाँ जी साहब ये सच है और वो झूठ। पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने नहीं देंगे। हमने ये कहानी बना रखी है बड़ी सुंदर। वी आर सो अटैच, हम इतने अच्छे लोग, कोई हमारी शहर जलाए, हमारा तवा सत्यानाश करे, औरतों की इज्जत लूटे, हम एक गाल पे चांटा मारे दूसरी गाल आगे करते हैं। तुम कुत्ते हो, कुत्ते। कुत्ते में भी वो भी लड़ पड़ता है अपने को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए। इसी ये क्या है साहब, ये एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी गेन करने के लिए एक ट्रिक था, एक एक ढकोसला था, एक कहानी थी मनगढ़ंत जो बनाई गई और 650 पेज लिख दिए इस मनगढ़ंत कहानी के। ये अपने मनगढ़ंत कहानी के 650 पेज लिखे बिपिन चंद्र पाल, जो कि ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है। अब सारी आईएएस के लोग जो पास होते, जो भी बेचारे हमारे आईएएस में गए हैं, उनको ये किताब पढ़ने पे मजबूर किया गया। ये नेहरू गांधी खानदान को उसके बड़प्पन के लिए, उसके महिमा मंडन के लिए था। अब वो इतिहास पढ़ के अगर जब वो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई भी सेक्रेटरी है, तो वो सोचते हैं कि ये सच है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप सिलेक्टेड लोग हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, क्रीमी de la क्रीम हो इस कंट्री की, आप तो कम से कम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, देन कम टू योर ओन कंक्लूजन। प्लीज कम टू योर ओन, प्लीज रीड, study the evidence and come to your own conclusion. That is all that I ask. Is that too much to ask? In the 125th anniversary year of Netaji Subhas Chandra Bose, क्या ये बहुत ज्यादा है रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारे आईएएस के जो हमारे बाबू हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इस एविडेंस को पढ़े, वो ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स यहां उसकी कॉपीज मंगवा ले साहब, लेकिन पढ़े तो। हमारे इतिहासकार प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक लेफ्टिस्ट एको चैम्बर बनाया गया है, एक ही चीज घुमा 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 के चलेगी। वो बिपिन चंद्रा लिख गया है, वो रुबेला थापर लिख गई है। अरे बाहर में गए अंग्रेजों के चाटुकार। अब एक नए आ गए हैं, रामचंद्र गोवा, वो जो कहते हैं वो अटल सत्य है, और कोई कहता है वो आरएसएस वाला है, वो राइट विंगर है, वो मोदी भक्त है। हाँ है तो क्या है, लेकिन मैं मोदी भक्ति के बुनियाद पे नहीं कह, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतिहास के तथ्य पढ़ें। प्लीज एग्जामिन फैक्ट्स, गो बाय फैक्ट्स, गो बाय empirical hard facts and you will come to the truth. सत्यमेव जयते इस देश का स्लोगन है। सत्य जानिए, it will liberate you, it will make you free of that colonial baggage which you are still carrying today. 20 burden है, आप गले का लोड गठरी लेके घूम रहे हैं कॉलोनियल कहानियों की, अंग्रेजों के थोपे गए मनगढ़ंत जो है नैरेटिव्स, जो कि हमारे चाटुकार लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने घुमा घुमा के बोला है। और वो कह गए हैं कि जो अंग्रेज कह गए बिल्कुल सही था, क्योंकि वो गोरे, तुम कुत्ते काले भूरे लोग, तुम कैसे चेंज कर सकते? ये है साहब एक और चाटुकारिता का एक नया कीर्तिमान। A new bloody record of bootlicking has been set in this country by distorting its history, by creating false narratives, which even 75 years after independence you can't get rid of, or you can't take a second look. You can't take a look at the new evidence that is now unearthed in terms of classified documents that have now been declassified by the British. वो 1977 में हुआ, इसका मतलब उसके पहले लिखा सारा इतिहास क्वेश्चन मार्क, because you have not studied the transfer of power arc. How can that be complete history? In the method
in the methodology of history, in historiography, you have to go by a method. You have to go by empirical facts. और मैं कह रहा हूं the empirical facts are now available. Please just crank them in. And I appeal to the BJP government. अब आप भी बहुत पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं हमारे, आप प्लीज जरा इसको मंगाइए, दस्तावेज मंगाइए, इसको पढ़िए, एक कमेटी बनाइए अच्छे ऑथेंटिक हिस्टोरियंस की। ये वामपंथी चाटुकार हमको नहीं चाहिए, जो मेरे को पसंद नहीं उसको बाहर कर, वो है ही नहीं इतिहास। जो मैं चाहता हूं वो इतिहास होगा, जो आप चाहते हैं वो इतिहास नहीं होगा साहब। जो सत्य है वो इतिहास होगा, वो सही इतिहास। अरे साहब, हमारे 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक शहीद हो गए। एक पत्थर है इस नामुराद देश में उनके नाम का? नहीं है साहब। केवल एकमात्र था मेमोरियल सिंगापुर में, जिसको 1945 में जब नेहरू वहां पहुंचा तो भारतीय मूल के लोगों ने बोला, साहब आप थोड़ा श्रद्धा करना, सुमन अर्पित करना चाहेंगे हमारे शहीदों को, ये लड़के मरे। और 26,000 उस जंग में जिसको तुम कहते हो नॉन वायलेंट थी, झूठ बोलने वाले, झूठे मक्कार, 26,000 शहीद हो गए साहब। उनके मकबरे पे जाके आप अपना सर नवाओगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई जैसे लड़के वहां मर गए साहब, भारत को आजाद करा, भारत को आजाद करा। और साहब आप जाके मत्था नहीं टेक सकते? तो बोले मैं जाऊंगा। वहां से फोन आया लॉर्ड लुई माउंटबेटन का, नेहरू जवाहर यू विल नॉट गो, तो नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, ठीक है साहब। और वो दुम दबा के बैठ गए अलग। और माउंटबेटन ने अपने ब्रिटिश इंजीनियर भेजे, एक्सप्लोजिव लगाए, बारूद लगाया और उसको उड़ा दिया। ठीकरी कर डाली साहब उस वॉर मेमोरियल। लेकिन हमारे कुछ भारतीयों को इज्जत भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, शर्म है। 1984 सिंगापुर के भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगाए और उस मेमोरियल को रीबिल्ड किया। अरे भारतवासियों, तुम खुद बना सकते हो, तुम्हारी अपनी सरकार है। अब नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। फिर अगर चाटुकार सरकार आ गई तो फिर तो भूल जाना। इसलिए हमारी सरकार को अपील है साहब कि लाल किले के परिसर में, लाल किले के सामने जो मैदान है, वहां पे एक शहीद स्मारक बनाइए हमारे 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिकों के नाम, जो शहीद हो गए और जो घायल हुए, जिन्होंने यातनाएं सही तुमको और मेरे को आजाद कराने। और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार, कि साहब इंडिया गेट के पीछे और नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने एक छतरी है जिसमें कभी किंग जॉर्ज V का पुतला होता था, ठीक है साहब। आज वो खाली पड़ा है पिछले 70 सालों, क्योंकि वो हटा दिया। इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी, वो फिट नहीं आई साहब, तो नतीजन वो खाली है। प्लीज वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाइए, राजपथ पे। चावड़ी बाजार में बना दिया है साहब, चांदनी चौक की उस गली में नेताजी का स्टैचू लगा दिया है, यही है उनकी औकात है। इससे ही ज्यादा है, तुमसे ज्यादा है, उनकी वजह से तुम आजाद हो। प्लीज डू इट। हमने साहब एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, कोई 1.5 महीना हुआ है, अभी तक 52,000 सिग्नेचर हुए। मेरी आपसे अपील है साहब कि अगर आप रियली नेताजी के बारे में कन्विंस्ड हो, देन डोंट बी लेजी, प्लीज मूव योर फिंगर, and join the signature campaign. We want it beyond 2, 3, 4 lakhs. What is the problem? बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ I agree, I do this, I do, but when you have to press a button, you are lazy.
When you have to ask the government कि साहब नेताजी के आजाद हिंद के शहीदों का एक वॉर मेमोरियल बनाए, यू आर साइलेंट. जब नेताजी की अपनी मूर्ति राजपथ पे लगाई जाए, वी आर साइलेंट. तो फिर लोग समझते हैं कोई फायदा नहीं हमारा इसमें, हम क्यों करें. हाँ, कोई फायदा नहीं हमारा. साफ फायदा हमारे देश का. वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम. हम कहाँ जा रहे हैं बहुत हद तक मुनस्सर है हम कहाँ से आए. हमको अपना इतिहास जान, अपना अतीत जान बहुत बहुत अनिवार्य है. बहुत झूठ, बहुत फरेब, बहुत धोखा हमारे साथ किया गया. केवल एक राजवंश. ये जानने का भी अधिकार है सर. वी डिजर्व टू नो द ट्रूथ. वी हैव टू नो द ट्रूथ. यू मस्ट नो द ट्रूथ बिकॉज द ट्रूथ कंसर्न्स अस ऑल. हम सबको ये जानना जरूरी है कि क्या सच है, वाकई में क्या हुआ, वाकई में हमें आजादी कैसे मिली. So in this connection, I would like to say one thing. Sorry. So in this connection, I would like to inform you something that I have asked for permission to the Department of Art and Culture, Government of Manipur, because at Moirang there is a war memorial and there is also a INA museum. So I have requested them so that I can make a documentary film over there. And very recently I have got the permission. So it's time. So very recently I'll go there and make a documentary. 14th of April is Moirang Day. That is the day on which the Azad Hind Fauj first unfurled the tricolor at Moirang near Imphal in Manipur. Yes, so yes. I'm very happy. I'm in touch with, I'm a part of that committee formed to celebrate Netaji's 125th anniversary, the high-powered committee chaired by the Prime Minister himself. We've had a meeting and we have planned out some events. The first ones have already taken place in Kolkata, first two. Now we are planning to hold more at Moirang and the other places, and hopefully we will. Hello. Hopefully these will also take place. We have requested that in 2019, the Prime Minister himself, Narendra Modi ji, had very kindly gone to the Red Fort, unfurled the national flag for a second time. Yes, sir. And, commemorated Netaji and the Azad Hind Fauj. Naik Lalti Ram of the Azad Hind Fauj was there with him on the dais to unfurl the national flag. And we hope this will be done again. We have requested the government. On that day, we have requested the government ki jab Pradhan Mantri ji jaye Lal Kile, वो एक वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन करें. कितना पैसे लगते हैं साहब, वो कोई कमी नहीं है इस देश के पास पैसे की एक वॉर मेमोरियल बनाने का आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए. और दूसरा, नेताजी का स्टैचू, अगर ये 21 अक्टूबर को ये दो चीजें हो जाएं, धन्य होगा वो जो ये करेगा, बहुत पुण्य कमाएगा. क्योंकि जो मृत आत्माएं हैं, जो आत्माएं जो भटक रही हैं 26,000 सिपाहियों की, नेताजी की, उनको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, तर्पण होगा, प्राण होगा पितरों का, और ऐसे पितरों का जिनकी वजह से आप आजाद. उन्होंने खून दिया तो आपको आजादी मिली. क्योंकि नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. उन्होंने खून दिया. They rose to his call so that you could forget them, so that you could bury them and glorify the अहिंसा वाला कि हमने लाठी खाई है,
अरे लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है, गोली खा के दिखाओ दम है तो, फांसी पे चढ़ के दिखाओ दम है तो। आपने भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, बिटकेश्वर दत्त को अपनी इतिहास की किताबों में टेररिस्ट बोला है, टेररिस्ट। अरे तुमसे बड़ा कुत्ता भी कोई हो सकता। और नेताजी का नाम आप तो भुला चुके हैं, गाड़ चुके थे। धनी है ये सरकार कि इसने फिर जिलाया। और हमारे जब नरसिम्हा राव साहब थे तब नेताजी की 100वीं जयंती मनाई गई। और उस वक्त मुझे हैरत हुई एक पढ़ के पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में कि देश प्रेम दिवस डिक्लेयर किया गया था 23 जनवरी। जैसे ही ये नेहरू गांधी डायनेस्टी की सरकार वापस आई, बिठा दिया, बिठा दिया। और कल अगर फिर आप लाएंगे तो फिर जो कुछ किया है उस पर सफा चट करके अपना झूठ थोपने की कोशिश करें। ये है असलियत, ये भारत के लोगों के और उनके कॉन्शियंस के बीच में। If you want to accept this nonsense, then it's your choice. जय भारत, जय हिंद। हेलो Sir, I would sir. now like Okay, sir. to Thank you very much. Right, sir. Right, sir. Thank you very much for giving time. Thank you very much for giving us time. And some other day we'll have another discussion, sir, in future. Thank you for joining us. Yeah. Jai Hind, sir. Thank you.